Okay, guys, so a little bit of portion was left from this medicine topic in the cardiovascular system that I left on because I had some other works to do in between these days है ना. One videos are coming daily है ना, एक वीडियो तो डेली आ ही रहा है, फार्मा का भी अभी चल रहा है. So now let us do the remaining portion of this medicine. Look, if we do medicine like 1 or 1.5 hour per day, and if we have already done like anatomy, physiology, biochem and patho, ठीक है, anat, physio, biochem and patho if we have already done, and let us do this medicine. If we say we do it 1 hour per day, that will be a very good. Our medicine will also be completed along with the revision of all those anatomy, physio, biochem and patho will also be done daily on the daily basis. So this is a better way to go towards our preparation. So let's see. True about the VSD is all except. Okay, so now you have to tell me among this which is true about VSD. ठीक है, VSD के बारे में सबसे यहाँ पे true कौन सा है? So if we talk about this, you have to see the options here. A small hole close spontaneously. Defect is usually in the membranous part. Endocarditis is the commonest complication, and pulmonary oligemia in the chest X-ray. So which is true about VSD. So let us see a little bit of about this is both in pedia and medicine, both this will come. So let's see, congenital heart disease. If we see this congenital heart diseases, that may be either acyanotic condition and or maybe cyanotic condition. So in acyanotic condition there will be ASD, VSD and PDA. Atrial septal defect, ventricular septal defect and patent ductus arteriosus, they are the acyanotic conditions. And in the cyanotic conditions you will have 5T. 5T, you must remember this 5T, that is 1T, that is tetralogy of Fallot. The next T is TGA, है ना. The next T is tricuspid atresia. The next is truncus arteriosus, total anomalous pulmonary venous TAPVC, and the next is Epstein anomaly. So all these things will be cyanotic condition. You must remember this because in pedia these questions are repeated so frequently. ठीक है, और cyanotic and cyanotic heart disease. Cyanotic heart disease में आपको 5T याद रखना है, और cyanotic में ASD, VSD and PDA. So let me give you a little bit more about this cyanotic condition. So if we see, if we try to integrate our radio here, what we'll see in the tetralogy of Fallot condition, we'll see boot-shaped heart. ठीक है, boot-shaped heart on the X-ray will be seen in generally tetralogy of Fallot. If they talk about egg on a string, ठीक है, egg on a string, that will be seen in TGA. ठीक है, egg on a string appearance will be seen in TGA. Snowman heart will be seen in TAPVC, and box-shaped heart will be seen in the condition of Epstein anomaly. This is very important. All of you know the importance of these questions. So TOF में boot shaped heart, one more time I am telling you, TOF में boot shaped heart, ठीक है, TGA में egg on a string, TAPVC में snowman heart, and box shaped heart is in case of Epstein anomaly. ठीक है, Epstein anomaly. Now let us talk a little bit about ventricular septal defect. So this ventricular septal defect, generally it is the most common congenital cardiac anomaly. It usually occurs in membranous septum. ठीक है, दो चीजें यहाँ पे हमको समझना है. The questions are, most of the questions will be framed from here. So if you know this much, this one line will help you to solve almost 90% of the question from this topic, because in any, either you go in patho or in medicine, the questions, or most of the time in the pedia, the questions is asked from here only. So let's see, the most common congenital cardiac anomaly, which is the most common cardiac congenital anomaly, that is nothing but ventricular septal defect, that is VSD. It generally occurs in which part? So there are like two options will be there, perimembranous and muscular. So generally our answers will be membranous or perimembranous part of the ventricular septum. ठीक है, so generally perimembranous or generally membranous septum will be our answer. If it is not present there, then we can go for muscular septum. Next, see, asymptomatic. It is generally asymptomatic at birth. I told you now, these are generally acyanotic condition. ठीक है, acyanotic condition, there will be no cyanosis happening there. So generally it is asymptomatic at birth. Most common congenital heart disease affected by infective endocarditis. The second question will be asked from this topic here only. So generally this is the most common congenital heart disease which is affected by infective endocarditis. So most common complication for this disease, ventricular septal defect, will be infective endocarditis. If we talk about the murmurs here, the shunt murmur seen in the ventricular septal defect will be pansystolic murmur. Throughout the systole, you will hear a murmur that is called as pansystolic murmur, and that is shunt murmur in the case of ventricular septal defect. So let us see a little bit more about ASD and VSD.
So if we talk about the ASD, the sounds, if we talk, the S1 will be loud, S1 S2 generally will be loud है ना, and S2 will be generally S2 will be wide fixed split, ठीक है, wide fixed split. If we talk about the murmurs, the shunt murmur will be absent in ASD है ना, and flow murmur, that is tricuspid में delayed diastolic murmur and mitral में ejection systolic murmur will be seen in case of ASD. If we talk about the VSD, S2 will be wide variable split, ठीक है, S2 will be wide and variable split of S2 will be seen in ventricular septal defect. If we talk about the murmur, the shunt murmur will be pan-systolic. Throughout the systole, we will hear this shunt murmur. The flow murmur, if we talk about the pulmonary, that will be ejection systolic murmur, and in the mitral case, there will be delayed diastolic murmur. Delayed diastolic murmur. Let's do a little bit about the ECG of this condition. So, on the ECG, if you see the VSD, that is ventricular septal defect, you will have left axis deviation, left atrial hypertrophy will be there, and left ventricular hypertrophy also will be present there. If we talk about the treatment, we can use digoxin plus furosemide can be used for the treatment of this condition. Indications for surgery, the best treatment for this when the symptoms are appearing is nothing but the surgery, and surgical treatment will be the best. So indications for surgery are nothing but any age with large defects in whom symptoms cannot be controlled medically. If the symptoms are not being controlled medically, then you have to go for surgery, and this is the indication of surgery. If we talk about the next indication, that is 6 to 12 months of age with large defects associated with pulmonary hypertension. If pulmonary hypertension is there and the defect is very large and the child is 6 to 12 months of age, you can go for surgery. The patients greater than 2 years with QP to QS generally रेशियो ग्रेटर देन 2:1, ठीक है, 2:1, ये याद करना है आपको. ये सर्जरी में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे. these three questions if you remember, that will be very important for your surgery portion also. Next is complication. So complication is Eisenmenger syndrome and infective endocarditis. I already told you about the infective endocarditis on the earlier slides also. So this is the complication of generally VSD. The two complications you must remember, Eisenmenger syndrome and infective endocarditis. If you remember this much for this VSD, that is far more than enough. If I try to just take you to this फर्स्ट एड टॉप, फर्स्ट एड में इसके बारे में क्या दिया हुआ है, इफ यू वांट टू सी, इफ यू सी देयर इट इज राइट टू लेफ्ट शंट. कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में देयर विल बी टू थिंग्स, दैट इज राइट टू लेफ्ट शंट एंड इन द अनदर कंडीशन देयर विल बी लेफ्ट टू राइट शंट. So right to left shunts generally there will be early cyanosis, blue babies will be there, often diagnosed prenatally or become evident immediately after the birth, usually require urgent surgical treatment, ठीक है, usually require urgent surgical treatment and or maintenance of PDA, ठीक है. पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, persistent truncus arteriosus, ठीक है. So this is generally truncus arteriosus fails to divide into pulmonary trunk and aorta due to failure of arteriopulmonary septum formation. Most patients have accompanying VSD, ठीक है. अब यहाँ पे मैं अगर आपको ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के बारे में बताऊँ, सो जनरली यू कैन सी द एक्सरे आउट एट हेयर, है ना, ये एक्सरे आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप खुद ही देख लो, इसको मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली लेट्स सी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में जनरली इसमें ये राइट टू लेफ्ट शंट यानी कि साइनोटिक कंडीशन, दैट इज 5T जो मैंने आपको बोला था वही. ट्रंकस आर्टेरियोसस है ना, ट्रांसपोजिशन टू स्विच्ड वेसल, टू वेसल्स विल बी ये स्विच्ड है ना, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, टेट्रालजिया, फैलट एंड TAPVR, ठीक है. नेक्स्ट देखो, सो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. सो देयर ऑर्टा विल लीव राइट ventricle, anterior and pulmonary trunk leaves left ventricle, posterior portion, separation of systemic and pulmonary circulations will be there, not compatible with life unless a shunt is present to allow mixing of blood. So generally if PDA is present in case of transposition of great arteries, will not go for closure of PDA, because in that condition that PDA is the life saving thing, ठीक है, PDA के वजह से ही जनरली लाइफ सेविंग वहाँ पे हो रहा है. So next if we talk about due to failure of the aorticopulmonary septum to spiral, that is narrow superior mediastinum, causes egg on a string appearance on CXR. I have already told you about this. Without surgical intervention, most infants die within the first few months of life. This is very dangerous condition. Next, if I talk about the tricuspid tricuspid atresia is simply the absence of tricuspid valve. Atresia simply means absent, है ना. So absence of tricuspid valve, hypoplastic, it has not been formed, atresia.
Hypoplastic right ventricle requires both ASD and VSD for viability. In this condition, if ASD and VSD is present, in the case of tricuspid atresia, if ASD and VSD is present, it is again life saving and we will not close that. ठीक है, नेक्स्ट देखो टेट्रालजी ऑफ फैलेट. टेट्रालजी ऑफ फैलेट यानी कि चार चीजें होंगी, टेट्रालॉजी बोल रहा है, एक दो तीन चार टेट्रा. ठीक है, so it is caused by antero-superior displacement of the infundibular septum. Most common cause of early childhood cyanosis. याद रखना, most common cause of early childhood cyanosis is nothing but tetralogy of Fallot. यहाँ पे देखो tetralogy of Fallot में generally pulmonary infundibular stenosis most important determinant for prognosis. First component pulmonary infundibular stenosis. सेकेंड टेट्रालॉजी है ना, चार कंपोनेंट्स होंगे. सो सेकेंड देयर इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विच विल बी बूट शेप्ड हार्ट ऑन CXR. ठीक है, बूट शेप्ड हार्ट ऑन CXR, कॉर इन सबो करके भी बोलते हैं उसको. ठीक है, ओवर राइडिंग aorta and VSD will be present. So these are the four components. So the first thing that you have to remember is tetralogy of Fallot. फोर components क्या क्या है? पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जिसमें ओवरराइडिंग aorta एंड VSD, फोर थिंग्स विल बी देयर. सो दिस फोर थिंग्स comprises the tetralogy. ठीक है, नेक्स्ट देखो pulmonary stenosis forces right to left flow across VSD to right ventricular hypertrophy. Let's state spells often caused by crying, fever and exercise due to the exacerbation of right ventricular outflow obstruction. ये इतना आपको याद रखना है. ठीक है, स्क्वेटिंग में इंक्रीज SBR, decrease right to left shunt, improve cyanosis and associated with 22q11 syndrome. This question can be asked to you in pathology also. If I talk about PAPVC, that is nothing but total anomalous pulmonary venous return. This is nothing but pulmonary veins drain into right heart circulation, SVC, coronary sinus etc. associated with ASD and sometimes PDA to allow for right to left shunting to maintain CO cardiac output. ठीक है, नेक्स्ट देखो Epstein anomaly. Epstein anomaly generally is displacement of tricuspid valve leaflets downward into right ventricle, artificially atrializing the ventricle associated with tricuspid regurgitation, accessory conduction pathways, right-sided heart failure can be seen in this condition. This can be caused by lithium exposure in utero. ठीक है, लिथियम जो मेनिया के लिए जो ड्रग यूज करते हैं जनरली, दैट्स वाई इट इज अ टेराटोजेनिक ड्रग हम बोलते हैं. इट कैन नॉट बी यूज इन द प्रेगनेंसी केसेस. ठीक है, वो हमने जनरली वी डिड अबाउट लिथियम इन द, और लिथियम के जो सारे यूजेस थे वो हमने लिथियम से ही याद किया था जनरली इन विच कंडीशंस इन आवर फार्मेकोलॉजी. ठीक है, फार्मेकोटॉपिक में नेक्स्ट देखो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज में नेक्स्ट जो है लेफ्ट टू राइट शंट्स, वो वाले थे राइट टू लेफ्ट शंट्स, ये है लेफ्ट टू राइट शंट्स. सो असाइनोटिक एट प्रेजेंटेशन साइनोसिस में अकर ईयर्स लेटर, फ्रीक्वेंसी VSD, सबसे ज़्यादा VSD मोस्ट कॉमन मैंने बोला था ना, उसके बाद ASD एंड देन विल बी PDA. सो राइट टू लेफ्ट शंट्स अर्ली साइनोसिस, ये देखो राइट टू लेफ्ट अर्ली साइनोसिस, left to right shunts there will be later cyanosis. So all those things that we are going to do now, ASD, VSD and PTA, all they will present with cyanosis in the later conditions of the life. So let's see ventricular septal defect. हमने बात कर ही लिया ventricular, so no need to do it again. नेक्स्ट देखो अट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ. सो डिफेक्ट इन इंट्रा आर्टियल सेप्टम, वाइड फिक्स्ड स्प्लिट S2, ओस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट्स मोस्ट कॉमन. याद रखना द क्वेश्चन दिस हैज बीन आस्क्ड इन जनरली योर पेडियाट्रिक्स कि कौन सा ASD कौन से टाइप का सबसे ज़्यादा क्या होता है जनरली, इट इज़ मोस्ट कॉमन. सो दैट इज नथिंग बट ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट्स most common and usually an isolated finding. Ostium primum defects rarer and usually occur with other cardiac anomalies. Symptoms range from none to heart failure, distinct from patent foramen oval which is due to failed fusion. Patent foramen oval is due to the generally the failed fusion. Next देखो O2 saturation increases in RA, RV and pulmonary artery may lead to paradoxical emboli, systemic venous emboli use ASD to bypass lungs and become systemic arterial emboli associated with Down syndrome. बहुत important question है associated with Down syndrome. So this is nothing but ASD. Next देखो patent ductus arteriosus. So if we talk about the PSD in fetal period, shunt is right to left, normal होता है वो right to left shunt. ठीक है, in neonatal period, the decreased pulmonary vascular resistance leads to the shunt becoming left to right, and progressive RVH and or LVH and heart failure can also occur associated with a continuous machine-like murmur. याद रखना continuous machine-like murmur is seen in case of PDA. Patency is maintained by PGE synthesis and low O2 tension. Uncorrected PDA can eventually result in late cyanosis in the lower extremities. That is also called as differential cyanosis. ठीक है, differential cyanosis.
सो दिस इज अबाउट पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। आइसन-मिंगर सिंड्रोम, आइसन-मिंगर सिंड्रोम हमने अभी ऊपर बात किया था। जनरली दिस वाज जनरली अ complication. Eisenmenger syndrome was a complication in case of generally VSD, Eisenmenger syndrome and infective endocarditis. So let's see, uncorrected left to right shunt, uncorrected left to right shunt, that is VSD, ASD, PDA can lead to generally Eisenmenger syndrome. That will lead to, देखो uncorrected left to right shunt, that is VSD, ASD and PDA के वजह से it will lead to increased pulmonary blood flow, that will lead to pathologic remodeling of vasculature, pulmonary arterial hypertension, right ventricular hypertrophy occurs. To compensate, shunt becomes right to left when RV is greater than LV pressure. RV pressure is greater than LV pressure. Generally, it causes late cyanosis, clubbing, and polycythemia. Age of onset varies depending on size and severity of the initial left to right shunt. So this is nothing but Eisenmenger syndrome. ये भी हमको याद रखना। आपको ये फिगर वगैरह देखना है तो आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। ये पीडीए तो जनरली क्या होता है, इट इज़ नॉर्मल इन यूट्रो एंड नॉर्मली क्लोजेज ओनली आफ्टर बर्थ, बट फिर भी अगर क्लोज नहीं हो रहा तो यू कैन गो फॉर सम एनएसएआईडी वगैरह हम देते हैं जिससे क्लोज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज जनरली द कंडीशन अबाउट ऑल द कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेज, ठीक है। एक और टॉपिक इसमें अगर आप कर ले तो पूरा का पूरा आपका पेडिया हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज congenital cardiac defect association. So if we talk about prenatal alcohol exposure, that is fetal alcohol syndrome, ठीक है, that will lead to BSD, PDA, ASD and tetralogy of Fallot in the generally the child, ठीक है। congenital rubella है अगर generally तो that will lead to PDA, pulmonary artery stenosis and septal defects. डाउन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ atrioventricular septal defect, endocardian Cushing defect जिसको बोलते हैं हम, एंड नेक्स्ट इज VSD एंड ASD। ASD याद करना है। इन्फेंट ऑफ पेशेंट विथ डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, दैट विल लीड टू ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्रंकस आर्टेरियोसस, है ना, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया एंड VSD। मार्फन सिंड्रोम से एसोसिएटेड क्या होगा, MVP, थोरासिक ऑर्टिक एन्यूरिज्म एंड डाइसेक्शन एंड ऑर्टिक रिगर्जिटेशन। प्रीनेटल लिथियम एक्सपोजर, दैट विल लीड टू एप्स्टीन एनोमली इन द चाइल्ड। टर्नर सिंड्रोम में बाइकस्पिड ऑर्टिक valve एंड कोएक्टेशन ऑफ ऑर्टा विल बी देयर। विलियम सिंड्रोम में सुप्रावैल्वुलर ऑर्टिक स्टेनोसिस एंड 22q11 सिंड्रोम, ट्रंकस आर्टेरियोसिस एंड टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट हमने ऊपर भी पढ़ा था। सो दीज आर जनरली द एसोसिएशन एंड डिफेक्ट, ठीक है। सो नाउ यू टेल मी, ठीक है, नाउ यू टेल मी ट्रू अबाउट VSD इज ऑल एक्सेप्ट, क्या होता है इसमें, ट्रू क्या होता है। सो नाउ वी हैव ऑलरेडी नोन दैट दिस इज जनरली द फॉल्स, बाकी सब ट्रू है। स्मॉल होल जनरली देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, डिफेक्ट इज यूजुअली जनरली, है ना, इन मेम्ब्रेनस पार्ट, है ना, ग्रेटर देन मस्क्यूलर पार्ट, है ना। endocarditis is the commonest, infective endocarditis is the commonest complication and the second one is Eisenmenger syndrome। pulmonary oligemia नहीं होता है यहाँ पे, pulmonary plethora होता है। let's see, chest x-ray in VSD does not show pulmonary oligemia, the pulmonary vasculature is increased and pulmonary plethora is generally seen in this case। bacterial endocarditis is rarely seen in, now you tell me, bacterial endocarditis is rarely seen in which condition, VSD, MVP, PDA and secondum ASD, बताओ। सो इसके लिए जनरली हमारे पास आंसर क्या होगा, दिस बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस जनरली इट इज सीन, इंडोकार्डाइटिस जनरली कहाँ पे होता है, लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट वाले जगह पे होता है। सो जनरली इट इज अनयूजुअल इन साइट्स विद अ स्मॉल प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज इन केस ऑफ सेकेंडम ASD और ASD, ठीक है, ASD। नेक्स्ट देखो, रॉथ स्पॉट्स आर सीन इन, ओके, दिस रॉथ स्पॉट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। जनरली इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में देयर विल बी सर्टेन लीजन्स एंड दिस लीजन्स आर टाइम एंड अगेन आस्क्ड टू यू। सो इफ यू टॉक अबाउट द रॉथ स्पॉट, ठीक है, रॉथ स्पॉट इज नथिंग बट, देखो ऑस्लर नोड्स क्या होते हैं, painful tender pea-sized erythematous nodules in the pulp of finger and sole, in the pulp of finger and sole, and they are generally painful, these are Osler's node। genuine lesions की अगर मैं बात करूँ, so they are non tender maculopapular, है ना, erythematous और hemorrhagic lesions commonly seen in palms and sole, ठीक है, palms and sole, not in the pulps। रॉथ लीजन्स की अगर मैं बात करूं, ओवल रेटाइनल हेमरेजेज विद अ क्लियर एंड पोल सेंटर, क्लियर एंड पोल सेंटर, दिस इज जनरली रॉथ लीजन्स। इतना याद रखो कि रेटाइनल हेमरेज है। नेक्स्ट देखो, स्प्लिंटर हेमरेजेज, लीनियर सब अंगुअल डार्क रेड स्ट्रिक्स, कॉमन इन फिंगर्स एंड अनकॉमन इन जनरली टोइज, ठीक है, अनकॉमन इन जनरली टोइज। सो जनरली यहाँ पे बताओ, रॉथ स्पॉट्स आर सीन इन, सो दिस रॉथ स्पॉट्स विल बी सीन इन जनरली इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, है ना, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, ठीक है, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो, a patient with prosthetic heart valve develops endocarditis 8 months after valve replacement, most likely organism। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस हैज बीन आस्क्ड इन पैथोलॉजी आल्सो। सो लेट्स सी,
If we talk about the infective endocarditis, this will be either for the native valve or for the prosthetic valve. So in the native valve condition, this infective endocarditis, either it is community acquired or nosocomial. So if I talk about the community acquired, infant में generally it is due to staph aureus है ना, and adults में it is due to streptococcus. Nosocomial में generally the cause will be staphylococcus aureus. Next अगर prosthetic valve, और क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं, this prosthetic valve question has been repeated so many times that it is generally prosthetic valve में generally less than 2 months में the main cause is epidermidis, staph epidermidis. ठीक है, ये देखो epidermidis. So यहाँ पे ऑप्शंस में देखो epidermidis, ये देखो the most common causative organism of infective endocarditis within the first 12 months after the valve surgery है ना, are coagulase negative staphylococcus epidermidis is a coagulase negative staphylococcus. Most common cause of infective endocarditis from all cause is staph aureus. most common Most common cause in native valve endocarditis and IV drug user is staph aureus. Most common cause in prosthetic valve is coagulase negative staphylococcus. इतना याद रखना है इसमें हमको. नेक्स्ट देख लो, लिबमैन सैक्स इंडोकार्डाइटिस इज सीन इन. सो देखो लिबमैन सैक्स इंडोकार्डाइटिस, अब इसको बस क्या कर लो, इस एस को बाहर निकालो और एल ई लिख दो. सो दिस इज नथिंग बट एस एल ई. सो इट इज एसोसिएटेड विथ एस एल ई. नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक इंडोकार्डाइटिस. लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट नॉन बैक्टीरियल thrombotic endocarditis, that is also called as marantic endocarditis है ना, रेयर है, it is non infective है. Vegetations typically arise in mitral or aortic valve and consists of sterile platelet rich thrombi that dislodge easily, usually asymptomatic until embolism occurs, associated with SLE, Liebman Sachs endocarditis. याद रखना है इतना, यहीं से क्वेश्चन देखो पूछ दिया गया. सो दिस इज आवर क्वेश्चन, ये आपने पैथो में किया होगा. Okay. So next extra questions. Carvalho sign is seen. So Carvalho sign generally क्या है? Carvalho sign is auscultatory augmentation of tricuspid murmur on inspiration is called as Carvalho sign. You must remember this, that the auscultatory augmentation of tricuspid murmur on inspiration is called as Carvalho sign. So Carvalho sign is seen in generally tricuspid regurgitation. Dose of Retiplex for management of acute MI. Acute MI में generally we will use 10 international units. The recommended dose for Retiplex for acute MI is 10 units. Bolus given over 2 minutes. It is recommended to repeat the second 10 units dose after 30 minutes. 2 bolus doses given 30 minutes apart are recommended. Total 20 units is required. All of the following are true about angina pectoris except Levine sign, crescendo, decrescendo, often radiates to trapezius and usually lasts 2 to 5 minutes. Okay, so this is generally often radiates to trapezius. Trapezius पे कभी भी radiate नहीं करता है generally. If we talk about the angina pectoris, let's see. Angina is rarely localized below the umbilicus. Below the umbilicus it is rarely localized or above the mandible and does not radiate to the trapezium muscles. नेक्स्ट देखो, अर्ब्स पॉइंट इन कार्डियोलॉजी रिफर्स टू. अर्ब्स पॉइंट यानी कि क्या आता है, दिस इज नथिंग बट द राइट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस. ऑल ऑफ यू know about this. Let's see, Erb's point refers to the third intercostal space on the left external border where both components of S2, that is A2 and P2, can be well appreciated. So this is generally a clinical question and very important for nowadays. Generally medicine में ऐसे questions पूछे जाते हैं. Erb's point in cardiology refers to. So let me give you a little bit more about the points of auscultation. ठीक है, थोड़ा सा मैं और बताता हूँ आपको about the point of the auscultation. देखो, auscultation of heart में generally if you want to see that aortic area, देखो aortic area कहाँ पे आता है, यहाँ देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड के नीचे यहाँ पे देखो सेकंड रिब के नीचे. सो दिस इज जनरली ए फॉर ऑर्टिक एरिया. ऑर्टिक एरिया जनरली सिस्टोलिक मर्मर्स यहाँ पे हम सुन सकते हैं इन केस ऑफ ऑर्टिक स्टेनोसिस, फ्लो मर्मर इन केस दैट इज फिजियोलॉजिकल मर्मर है ना, एंड ऑर्टिक वॉल्व स्क्लेरोसिस के लिए हमको यहाँ पे स्कल्टेट करना पड़ेगा. इफ वी टॉक अबाउट द ट्राइकस्पिड एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया ये देखो यहाँ पे आता है ट्राइकस्पिड एरिया है ना, ट्राइकस्पिड एरिया. द होलोसिस्टोलिक मर्मर कैन बी लिसन्ड हियर, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन कैन बी लिसन्ड हियर. वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में यहाँ सुन सकते हैं डायस्टोलिक मर्मर, एंड डायस्टोलिक मर्मर में जनरली हम यहाँ पे क्या सुन सकते हैं, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस की मर्मर जनरली वी कैन हियर हियर. नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा. सो पल्मोनिक एरिया में, पल्मोनिक एरिया में जनरली सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर्स लाइक पल्मोनिक स्टेनोसिस, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट एंड फ्लो मर्मर्स कैन बी हर्ड हियर है ना.
इफ वी टॉक अबाउट द माइट्रल एरिया, दैट इज एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट, ये यम है ना माइट्रल, यहाँ पे सिस्टोलिक मर्मर्स इन केस ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइट्रल valve prolapse, and diastolic murmur in case of the mitral stenosis can be heard. This is nothing but the left sternal border. Here we can see the hypertrophic systolic murmurs, and cardiomyopathy के generally systolic murmurs can be heard, and diastolic murmurs like in aortic regurgitation and pulmonic regurgitation can be heard here. So this is all about generally the auscultation of the heart also. So this is very important diagram for you, not only for questions but also for your clinical knowledge also. This I have taken from the first aid, ठीक है, first aid से मैंने लिया था, so that everything can be correlated here. So this is all about the topics today, ठीक है, ठीक है. So this is all about the topics today. Let's move forward tomorrow with the next topic, that is cardiovascular हमने कर लिया है. आप लोग अभी भी कमेंट में लिख सकते हो कि विच टॉपिक डू यू वांट to do of this generally medicine from tomorrow. That will be better for us. And if we do like 40 45 minutes, 20 minutes, 30 minutes, जितना भी हम कर सके, that will be very good for our generally revision topic, क्योंकि इससे एनाटमी, फिजियो, बायोकेम सारे पैथो सारे रिवाइज भी हो जाएंगे और मेडिसिन का एक टॉपिक खत्म भी हो जाएगा. एंड दिस इज द वेरी गुड वे टू जनरली गो फॉर मेडिसिन. ठीक है. सो दिस मच फॉर दिस वीडियो. आई विल ट्राई टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.